Hello all. Today we are going to discuss structures containing pointers of the same type. Like, look at this structure. We have a struct distance. Okay, let's change the name of the distance to some other name. Struct, let's call it container. Now the struct container contains two things. Info, which is an integer. If the integer is 4 bytes, it will allocate 4 bytes. What is the size of the structure on a 32-bit machine? 4 bytes. 4 bytes will be allocated to integer. What about this? 2 bytes. Anybody else? Make a guess with a reason. No, Shravan? That is also not correct. When you declare a structure variable of this structure, how much memory will be allocated? Oh, why are you people so silent here? 4 bytes, sir. Not. Suppose I create a new structure. Data struct.h. In this new structure, I create a new structure. Type def node like this. Good evening, sir. Good evening. Int info and struct node star next. Now next is a pointer of type node. Look at this. First of all, I introduce a type def to you. Let me start a new Jamboard. Okay, now I have created this structure here. Watch this structure carefully. When I allocate space for this structure, I have used first a keyword called type def. First, let us try to understand what is this type def. Type def. It is a keyword used to give name to user defined data structures. Like the data structure I have created is called struct node. Struct node is a data type, but I can give it a name, an alias kind of thing. So type def is used for that purpose. It is used to give a new name to user defined data structure. User defined data structure is struct node. A new name given to this is node node.
This is the new name called node given to struct node. Instead of struct node, struct node, struct node, now we'll say only node with capital N. Okay. अब ये struct node, struct node, struct node नहीं लिखना पड़ेगा. We can do away with only writing node. Suppose you have to declare a structure variable. Earlier you used to do struct node D. Now you will do this node D. Struct node नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ node. Okay. That is one thing. Second thing, how much space will be allocated to this structure when you declare structure variable. Node N, node D suppose. Now this D is a structure variable. Of type node. This D is a structure variable. Now of type D, of type node. Now when the structure variable of type node is declared, how much space is allocated? Well, space is allocated like this. First you allocate 4 bytes for integer, this integer, and then you allocate 4 more bytes for the integer pointer. Suppose this is a 32-bit machine. Then on 32-bit machines, you'll have 4 bytes allocated for integer, and you'll have 4 bytes allocated for the integer pointer. You have not put any value in integer till now. Similarly, you have not put any address in the integer pointer till now. So the reference is something like this. This structure variable refers to the structure. Inside the structure, this is your info part. And this is your star next part. None of these two variables, the integer variable or struct node pointer variable, none of these are initialized. Total space allocated for the structure is 4 plus 4, that is 8 bytes. Allocated. Sir, how do you know that about a pointer variable is integer type? It's not integer type. It's a whatever type, integer pointer, character pointer, structure pointer, float pointer, whatever pointer. Pointer contains address, it is always going to be of same type. Okay. Your question is relevant. I said integer pointer. So this is how the structures are created, and this is how the pointers occupy memory. You understand this, all of you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now, instead of let me remove these things which I have already explained to you. Now instead of structure variable, I will create structure pointer of type node. Sir, I have a question. Can you please make keep on focus something like I have some confusion in enum and type def. Enum I will tell you later on in data structure. Type def I am telling you now. I'll tell you more. Type def is used to give a new name
to user defined data structure. Your user defined data structure is Node. no struct node. Where it is? There. Okay. Struct node, right? This is the user defined data structure. To this user defined data structure struct node, you are giving a new name. This is a new name, node e node, given to the struct Capital node. So instead of struct node, in the rest of the program you will use capital N wala node. Now onwards. Right. Sir, if Right. we have 3 variables, how much byte it taken? If you create 3 variables called D, E, F, then space will be allocated like this. Space for D and space for E and space for F. But these spaces are only located when the program will run, not on the compiled side, right? Yeah, exactly. The space will be allocated when the program runs and you declare a variable of type structure. So if you declare 3 variables, then the space is allocated for 3 variables. For D, this, and for E, structure is allocated here, and for F, memory is allocated here. In this case, this variable will be called d.info, d.next. This will be called e.info, and this will be called e.next. f.info, and the name of this variable, even if it is pointer variable, the name is still same format, f.next. Naming happens like this, and the memory is allocated like this: 4 bytes for info, integer variable, and 4 bytes for next, which is a pointer variable. If it's a 64-bit machines, then it will take 8 bits for info and next both. Is it okay, Murshid? Yes, sir. Now if you create a structure pointer like this, structure pointer of type node, then no memory is allocated, because this is a structure pointer. Pointer will contain address. No memory is allocated. Memory will be allocated when you will do malloc. When you do structure variable, memory is allocated immediately. But as we are using structure pointers, memory will be allocated only when malloc is done. Okay.
Now, how do you do malloc? Like this. Malloc will be used to allocate memory. How much memory you have to allocate? You have to give the number of bytes. You will give the number of bytes as size of node. See, instead of struct node, you have mentioned capital letter for a node. Memory will be allocated like this, and struct node is suppose 32-bit machine 4 plus 4 8 bytes. So that 8 bytes will be used as 8 characters, 8 or 2 integers or 2 pointers or what, I don't know. So you have to typecast it to node pointer. Now it is known that the memory is allocated to what, and the starting address will be stored in the pointer called D. So here the memory is allocated to the pointer. Now the structure will contain, suppose this is a pointer. Now this pointer will contain address of the structure. Okay. And the name of these two fields will be, D is the pointer, so the name will be D points to info. And the name of this location will be D points to next. The dot is used with the structure variables. Arrow is used with structure pointers. We have seen it in MDC project also, isn't it? Right? Any questions? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. No, sir. Let's proceed further. This is a structure, and the memory will be allocated to the structures, and you will have the structure pointer. Using this. Okay. Now this point D points to next is a structure pointer. Now this particular structure contains the starting address of the first structure. Let us change the name of this structure variable from D to some meaningful name. Say I gave it start, node star start. We are moving towards linked list now. So here you have address of start node. Let's give it some symbolic numbers. Say this is node number 0, which is going to be the start node. Okay. Now suppose you want to create another node. Oh, before that, the starting address of this node is now stored in start. Now suppose you want to create another node. So you'll do malloc again. Another malloc. When you do another malloc, another memory is allocated, so you have another structure here. So if I write node dot info, so what does it mean? I am giving value to that structure variable, or I am taking the value out from the structure variable?
No, when you do d points to info, you're not giving or taking value, you're just naming it. Okay. You've not yet given any value to this, I just named it. Now when you created another structure here, now in the architecture of the linked list, the starting address of the next node that you have created should not be stored in the start pointer, because the start pointer contains the address of 0th node. Isn't it? So if you write the starting address of the next node also in the same pointer, then the address of the same pointer is given the 0th node will be overwritten by the address of node number 1. Isn't it? We don't want that. We actually, what we want is that the address of this node, starting address of this node, should be written here. What is the name of this location? +1. Name of this location. यही लिंक लिस्ट में ट्रिक है. इस लोकेशन का नाम क्या है? Sir, start pointer next. हाँ, right. So let me change the names here also. This is not D anymore. This is start points to next info, and this is start points to next. These are the names. Now this is what is supposed to be learned. I have to keep the address of new structure that I have created into the next pointer position of the previous structure. Now my question comes to you is, what is the name of the place where we keep the address of the next structure? What is the name of this location? Program counter. ये क्या है नया प्रोग्राम काउंटर? मैंने नाम लिखा है, इस लोकेशन का नाम है स्टार्ट पॉइंट्स टू नेक्स्ट, इस लोकेशन का नाम है स्टार्ट पॉइंट्स टू इन्फो. मैंने न्यू नोड का एड्रेस रखना है स्टार्ट पॉइंट्स टू नेक्स्ट में, तो यहाँ पे हम लगा देंगे स्टार्ट पॉइंट्स टू नेक्स्ट. स्टार्ट is a pointer of type node star. Next is also a pointer of type node star, isn't it? तो नई नोड जो बनी नोड स्टार पॉइंटर में डाल दिया. देखो, इज दैट क्लियर? चलो इसे और क्लियर करते हैं, एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं. एक और नोड बनाते हैं. वॉच दिस नाउ. आई क्रिएट अ न्यू नोड. एक और स्ट्रक्चर बन गया, ये मैं लॉक किया हमने. नोड नंबर, लेट्स गिव इट अ नंबर. अच्छा, इसका एड्रेस तो मैंने यहाँ रखा ना, पहले ये लिख दूँ. हेयर वी रोट एड्रेस ऑफ 1. Address of 1. ओके, अभी एक और नई नोड बना दी ये वाली. इसको एक नंबर दे देते हैं. सपोज दिस वाज योर, इसको लिख देता हूँ ऐसे, बार बार कॉपी होगा. नोड नंबर 0. दिस इज नोड नंबर हमने जो बनाई थी, सपोज दिस वाज 1.
ये सिंबॉलिक है नंबर, ये कोई नाम नहीं है या एड्रेस नहीं है. दिस नोड नंबर 2. अभी नोड नंबर 2 बना ली. तो नोड नंबर 2 में यू विल हैव 2 fields. And the both fields will have the name. अभी नोड नंबर 2 की बाद में बात करते हैं, पहले 1 की बात करते हैं, पहले 0 की बात करते हैं. इस लोकेशन का नाम क्या था बोलो? Start arrow. Start in Points to into. Very good. The name of this location? Start points to next. Start point. Why start points to? Because the name of the pointer pointing to this node was start and the internal element name was info. The name of the pointer pointing to this structure was start and the element name was next. Now give me the name of this location. Name of the pointer pointing to this structure points to info. What is the name of the structure pointing to this particular structure? Where have you stored the address of structure 1? start pointing to next. वही तो नाम है. हाँ वही नाम होगा. Start points to next is the name of the structure, which points to info. All of you understand this point? Then you tell me. Yes, sir. Yes, sir. So the syntax is the pointer name points to element name. The pointer name was start points to element name is element name is info. The pointer name is start and the element name is next. The pointer's name is start points to next and the element name is info. Here the pointer name is start point to next. ये देखो ये पे address है इसका and the element name is next. Now based on this, when we create a next node, node number 2, the starting address of node number 2 should be stored in this location. What is the name of this location? Start point to next. Point to next. Ah, good. Start point to next points to next is the name of the pointer where you will keep the starting address of this node. So what is the name of this location now? Start point to next. Points to next. Points to info. Ah, very good. Start points to next, points to next, points to info. And the name of this location? Start points to next. Points to next. Points to next. Very good. Start points to next, points to next, points to next. ये इस लोकेशन का नाम है. ठीक है? एक और स्ट्रक्चर बनाए. Yes, sir. देखो इस स्ट्रक्चर के नेक्स्ट पॉइंटर में यू हैव एड्रेस ऑफ नोड नंबर 1 एंड दिस स्ट्रक्चर you will contain address of node number 2. This structure pointer will contain address of node number 2 and this structure, that is the last structure in the linked list. The last structure in the linked list cannot contain address of any more structure because there is no more structure, so it should contain null. तो सर ऐसे करने से होगा क्या? लिंक लिस्ट बन रही है देखो, एक linked set of structures, isn't it? Shall we create one more? Yes, sir. Okay, let's create one more. Yes, sir. Another structure will create. Another structure will get created like this. Another structure. It will have 2 fields just like any other structure. All the structures are of the same type. Okay. This structure will have its own sequential number. Will not have this. I am giving just for the purpose of explanation. 3. And this structure will have its own name. And this element will also have its own name, where you will store null.
Whenever you create the last node, always store null in this. And now the linked list says that the address of the last node that you have created just now should be stored in this pointer here. Where you had null earlier. That null will be replaced by new address. Okay, and this pointer which was null will no longer be null. Instead, here you'll have address of node number 3. What is the name of this location? Start point to next, point to next, point to next. 3 बार next है. So this will be next, like this. लिंक लिस्ट बन रही है ना? पर एक प्रॉब्लम दिख रही है आप सबको? Okay, tell me, what is the name of this location? Start points to next, points to next, points to next, points to info. Points to next, points to info. यहाँ points to रह गया था. And the name of this location will also? Start point to next, points to next, points to next, points to next. नहीं पॉइंट्स टू नल होगा ना. 4 बार नेक्स्ट हो गया. यहाँ 3 बार नेक्स्ट 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 था. ये 3 बार नेक्स्ट 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 पॉइंटर का नाम हो गया. पॉइंट्स टू नेक्स्ट एलिमेंट का नाम हो गया. और हाँ, यहाँ पे नल होगा. ये बात भी सही है. ऐसे लिंक लिस्ट बनेगी. तो लिंक लिस्ट तो बन रही है बिल्कुल सही से. कोई प्रॉब्लम दिख रही है इसमें? लेंथ बढ़ता जा रहा है ना नाम का लेंथ बढ़ रहा है ना? ये प्रॉब्लम है. तो इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे. कोई छोटा नाम रखेंगे. हाँ, चलो पहली नोट बनाते हैं. ये रही हमारी पहली नोट. मैं लॉक किया तो स्टार्टिंग एड्रेस स्टार्ट पे रखा. स्टार्ट विल कंटेन एड्रेस ऑफ नोड 0. द नोड 0 फर्स्ट पॉइंटर नेम विल बी स्टार्ट पॉइंट्स टू इन्फो. Name will be start points to info, and name of this field will be start points to info, and the name of this field will be start points to next. ये तो पहला काम हुई. Yes. इन तीनों को हम यूज नहीं करेंगे. मैं ऐसे छोड़ देता हूँ ब्लू में. अब अगली नोट बनानी है ये वाली. तो वो कैसे बनेगी? फिर मैलॉक होगा. मैलॉक नोड नंबर 1 बन गई. नोड नंबर का 1 स्टार्टिंग एड्रेस हमने स्टार्ट पॉइंट टू नेक्स्ट में डाला था, है ना? इसका नाम स्टार्ट पॉइंट टू नेक्स्ट था. अब हम क्या करेंगे? ये जो पिछली बार नोड बनाई थी ना, स्टार्ट पॉइंट टू नेक्स्ट, जिसमें स्टार्टिंग एड्रेस हमने स्टार्ट में डाला था, इस बार हम 2 पॉइंटर बनाएंगे. एक स्टार्ट, एक लास्ट. 2 पॉइंटर होंगे. लास्ट में भी आ जाएगा एड्रेस ऑफ 0. एड्रेस ऑफ नोड 0 ही आया इसमें भी. दोनों में एड्रेस ऑफ 0 है, एंड बोथ आर रेफरिंग टू द सेम नोड. तो इस लोकेशन के 2 नाम हो गए, क्योंकि 2 पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे. एक नाम है स्टार्ट पॉइंट्स टू इन्फो, दूसरा नाम है लास्ट पॉइंट्स टू इन्फो. I hope everybody is able to understand this point. Yes, sir. Yes sir.
ठीक है, बिल्कुल ध्यान से अच्छे से लिंक लिस्ट सीखनी है, क्योंकि अगर लिंक लिस्ट अच्छे से समझ में आ गई तो you will sail through rest of the data structures. But if you have problem in linked list, you will be in problem forever. Everybody, please use the link given in the chat box to connect with this Jamboard. Okay. Now I am going to create the next node. In the next node, let us change the names. It has two names now. It has last points to info, and another name to this element is last points to next. Now I'm going to create the next node. When I'm going to create the next node, another node number 1 is created. Oh, wait. We have another pointer here in which you keep address of 0. And both are referring here only. Okay. Now we create a new node. One more change we have done, like the starting address of the node was stored in start, okay, but it is also stored in last. Now, when we create the first node, the starting address of the first node should be stored here. All of you know that? Tell me, what is the name of this location? Start points to next, last points to next. Last points to next. So use the other name. Last points to next. Last points to next means here. So you have stored the address at last points to next, which is the correct name, isn't it? Yes. Okay. The name of this pointer is last. In which I have stored address of node 0. Now this is not the last node because the node number 1 has been created, isn't it? Because the node number 1 has been created, therefore this becomes the last node. अब तो ये लास्ट नोड नहीं रह गई ना, ये स्टार्ट नोड रह गई, ये लास्ट नोड हो गई क्योंकि नई नोड बन गई है, नोड नंबर 1 बन गई है, नोड नंबर 0 बन गई थी, अब ये नोड नंबर 1 भी बन गई है। जब नोड नंबर 1 बन गई है तो लास्ट नोड तो नोड नंबर 1 हो गई ना, तो लास्ट शुड नॉट स्टे हेयर, नाउ द लास्ट शुड कम हेयर, लास्ट शुड नाउ पॉइंट हेयर and not here. और ऐसा करने के लिए क्या करें, मतलब कि लास्ट में नोड नंबर 1 का एड्रेस डालना है। अब देखो ध्यान से सुनो, नहीं समझ में आया तो पूछना। द लास्ट पॉइंटर कंटेन्स एड्रेस ऑफ नोड 0. आई वॉन्ट द लास्ट पॉइंटर टू स्टोर एड्रेस ऑफ 1. नाउ यू टेल मी, from where do I pick the address of node number 1 and put it in last? नोड नंबर 1 का एड्रेस अभी कहां पड़ा है, उस पॉइंटर का नाम लो। Start point to next, points to info. Start point to next. मुर्शीद फिर से बोलना। Start points to next, points to info. इन्फो तो ये है, क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? एड्रेस यहां पड़ा है। स्टार्ट पॉइंट टू नेक्स्ट, Start point to next पे बुलाएगा. उसका नाम है स्टार्ट पॉइंट्स टू नेक्स्ट, दूसरा नाम है लास्ट Okay. पॉइंट्स टू नेक्स्ट। Yes sir. तो एड्रेस तो लास्ट पॉइंट्स टू नेक्स्ट में पड़ा है, Yes sir. उसे डालना है लास्ट में। So you have to pick the address from last points to next, and you have to put the address in last. What is the C statement for this? Try to give me the C statement for this. Hold on, सोचो एक मिनट। हेलो हेलो, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? आप कहाँ थे?
अच्छा ठीक है, मैं सेशन के बाद बात करता हूँ। हेलो। हाँ, अब मेरे को ये बताओ कि इसमें मैं नोड नंबर 1 का एड्रेस कहाँ से उठा के लास्ट में डालूँ, उसके लिए सी स्टेटमेंट क्या होगी? सी स्टेटमेंट ऐसे होती है, देखो यही सीखना है। मतलब किसी सोर्स लोकेशन से डेटा उठा के किसी डेस्टिनेशन लोकेशन पे डालना है एड्रेस को, तो वो सोर्स लोकेशन का नाम क्या है और डेस्टिनेशन लोकेशन का नाम क्या है? कहाँ से एड्रेस उठाना है और कहाँ डालना है, उन दोनों पॉइंटर्स का नाम क्या है? और डेस्टिनेशन पॉइंटर का नाम है लास्ट। वेरी गुड, रुक जाओ। अब अविनाश को छोड़ के कोई और बोलेगा। सर लास्ट पॉइंट्स टू नेक्स्ट। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। लास्ट पॉइंट्स टू नेक्स्ट में जो डेटा था उसे उठाओ, वो था एड्रेस ऑफ 1 और उसे डाल दो लास्ट में यहाँ पे। हो गया? अब इस लोकेशन का नाम लास्ट पॉइंट्स टू नेक्स्ट नहीं रह गया। सर हम लोग एड्रेस स्टोर करें बट लास्ट तो पॉइंटर दिख नहीं रहा। एक मिनट, इसका नाम लास्ट पॉइंट्स टू नेक्स्ट नहीं रह गया। इसका नाम अब हो गया, क्या नाम हो गया? लास्ट पॉइंट पॉइंट्स टू इन्फो हो गया। नेक्स्ट हाँ, पॉइंट लास्ट पॉइंट्स लास्ट टू पॉइंट्स टू इन्फो। इन्फो। इस लोकेशन का नाम क्या हो गया? लास्ट पॉइंट्स टू नेक्स्ट। वेरी गुड, लास्ट पॉइंट्स टू नेक्स्ट। देखो इस बार हमने नई नोट बना दी और नाम अननेसेसरीली बड़ा नहीं हुआ। सर लास्ट पॉइंटर है ना? हाँ, लास्ट देखो पॉइंटर है। अच्छा, इसे पॉइंटर बना दो। हाँ अविनाश, अब बताओ क्या बोल रहे थे? नहीं हो गया, आपने पॉइंटर बना दिया। अच्छा, वो कंफ्यूजन था। चलो ये भी हो गया है ना। अब एक और नोट बनाए। यस सर। नई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि जब हम मैलॉक करेंगे, नोड नंबर 2 बनाएंगे, नोड नंबर 2 का एड्रेस कहाँ डालेंगे? यहाँ डालेंगे ना। यस सर। तो जब यहाँ पे नोड नंबर 2 का एड्रेस डालेंगे तो इस लोकेशन का नाम क्या है? लास्ट पॉइंट्स टू नेक्स्ट। ध्यान से सुनना, सारे नहीं समझ में आएगा तो पूछना, अगर आपने नहीं पूछा तो आपसे बेवकूफ़ इंसान इस क्लास में है ही नहीं। नोड नंबर 2 नई नोड बनेगी, मैलॉक करा, नई नोड बना दी, चलो ऑरेंज हो गई, बन गई। इसका स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर करना है जिस पॉइंटर में, उस पॉइंटर का नाम है लास्ट पॉइंट्स टू नेक्स्ट। ये देखो पहले से वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट्स टू नेक्स्ट तो यही थी, इसी में नोड नंबर 2 का एड्रेस डाल दिया। अब नोड नंबर 2 भी बन गई। अब मेरे को बताओ, नोड नंबर 1 ही लास्ट नोड रह गई या नोड नंबर 2 लास्ट नोड हो गई? 2 हो गई लास्ट नोड। तो यहाँ पे अब किसका एड्रेस होना चाहिए? 2 का। 2 का एड्रेस होना चाहिए कि 2 अब लास्ट नोड हो गई। तो 2 का एड्रेस इसमें डालने के लिए अभी 2 का एड्रेस कहाँ पड़ा है? और लास्ट पॉइंट टू नेक्स्ट में। लास्ट पॉइंट टू नेक्स्ट में पड़ा है, देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है। और डालना क्या है? 2 पे। मतलब नेक्स्ट पे डालना है और लास्ट नहीं के नहीं नहीं पॉइंटर नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। ये वाली नोड अब लास्ट नोड हो गई है, ध्यान से सुनो। तो इस वाली नोड का एड्रेस लास्ट में होना चाहिए, यस सर। ठीक है। पर इस वाली नोड का एड्रेस लास्ट में डालने के लिए इस वाली नोड का एड्रेस कहाँ पड़ा है? उस पॉइंटर का नाम बताओ।
लास्ट पॉइंट टू नेक्स्ट। लास्ट पॉइंट टू नेक्स्ट में पड़ा है। और इसका एड्रेस डालना क्या है? स्टार्ट उस पॉइंट का Points- नाम बताओ, कहाँ डालना है? लास्ट। लास्ट में, तभी तो लास्ट यहाँ पॉइंट करेगा और ये वाली नोड लास्ट नोड बनेगी। अब ये लास्ट नोड नहीं रह जाएगी। ऐसा करने के लिए नोड नंबर 2 का एड्रेस इसमें डालना पड़ेगा, है ना। अब नोड नंबर 2 का एड्रेस कहाँ से उठाऊं और कहाँ डालूं? नोड नंबर 2 का एड्रेस यहाँ पड़ा है, यहाँ से उठा के यहाँ डालना है। तो ये डेस्टिनेशन हो गई, ये सोर्स हो गई। सोर्स और डेस्टिनेशन का नाम बताओ जरा। लास्ट पॉइंट टू नेक्स्ट हो गया और सोर्स, और लास्ट वो तो लिखा हुआ ही है सारा। लिखा हुआ ही है। हाँ वही तो यार, वो तो लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो इसका मतलब यहां से एक लूप चला दो। डू यू वांट टू इंसर्ट अनदर नोड? इफ यस आया तो ऊपर को, फिर मैं लॉक करो। ये बन गई नोड नंबर 3। उसका एड्रेस डालना है। अच्छा, यहाँ पे जब हमने नोड नंबर 2 का एड्रेस डाल दिया, ये स्टेटमेंट लास्ट पॉइंट टू नेक्स्ट, जहाँ पे एड्रेस ऑफ 2 को डाल दिया लास्ट में, तो यहाँ आ गया एड्रेस ऑफ 2। एड्रेस ऑफ 2 यहाँ आ चुका है। तो इस लोकेशन का नाम क्या हो गया? जब एड्रेस ऑफ 2 डाल दिया लास्ट में, तो इस लोकेशन का नया नाम क्या हो गया? लास्ट पॉइंट्स टू इन्फो। लास्ट पॉइंट्स टू इन्फो। वेरी गुड। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप चुपचाप बैठे हैं तो आप क्या है? बेवकूफ। हाँ, लास्ट पॉइंट टू नेक्स्ट। अब मेरे को बताओ, डू यू वांट टू इंसर्ट अनदर नोड? यस, ऊपर जाओ, मैं लॉक करो। ये नोड नंबर 3 के लिए मैं लॉक कर दिया। मैं लॉक करके उसका एड्रेस डालो लास्ट पॉइंट, फिर ये यहाँ पे लास्ट पॉइंट टू नेक्स्ट में। तो क्या इसका नाम लास्ट पॉइंट टू नेक्स्ट है? इसका नोड नंबर 3 का एड्रेस यहाँ जाना है, इसका नाम लास्ट पॉइंट टू नेक्स्ट है ना। यहाँ पे एड्रेस ऑफ 3 आ गया स्टोर करके। उसके बाद लास्ट पॉइंट टू नेक्स्ट में क्या है? लास्ट पॉइंट टू नेक्स्ट में है एड्रेस ऑफ 3, उसको डाल दो लास्ट में। यहाँ पे एड्रेस ऑफ 3 डाल दिया तो हमारी लास्ट नोड भी चेंज हो गई। लास्ट नोड, न्यू नोड जो थी वो लास्ट नोड हो गई। अब ये हमारी लास्ट नोड जो कि न्यू नोड, और ये वाली नोड अब लास्ट नोड नहीं है। और इसका नाम अब क्या हो गया? लास्ट पॉइंट टू इन्फो। लास्ट पॉइंट्स टू इन्फो। और इसका नाम लास्ट पॉइंट्स टू नेक्स्ट। वेरी गुड, लास्ट पॉइंट्स टू नेक्स्ट, जो कि नल है। इस तरह से लूप में लिंक लिस्ट बनाते रहो, जितनी मर्जी नोड बना दो। हाँ, एक बात बताओ जरा, अभी लास्ट तो इधर आ गया है ना। अब इस नोड का क्या नाम रह गया? क्या इसका नाम लास्ट पॉइंट टू नेक्स्ट है? नो सर। नहीं है। इसका नाम अब लास्ट पॉइंट टू इन्फो नहीं रह गया। ये हो गई अननेम्ड नोड। अननेम्ड। इसका नाम लास्ट पॉइंट टू इन्फो है? नो सर। नहीं, इसका भी लास्ट पॉइंट टू नेक्स्ट में नाम नहीं। सिर्फ फर्स्ट नोड का नाम होगा स्टार्ट पॉइंट्स टू इन्फो, स्टार्ट पॉइंट टू नेक्स्ट। और सिर्फ लास्ट पॉइंट नोड का नाम होगा लास्ट पॉइंट्स टू इन्फो, लास्ट पॉइंट टू नेक्स्ट। जितने भी इंटरमीडिएट बीच वाले नेम नोड हुई उनका नाम नहीं होता, उनको एक्सेस कर ही नहीं सकते। मतलब वो गुमशुदा होते हैं? गुमशुदा नहीं होते हैं। उनमें जाना है तो पहले स्टार्ट नोड में जाओ, और स्टार्ट नोड से इस रास्ते से होते हुए 1 पे आओ, फिर इस रास्ते से होते हुए 2 पे जाओ, इस रास्ते से होते हुए लास्ट तक जाओ। तो मतलब सीरीज कनेक्शन हो गया। लिंक लिस्ट इज ए लीनियर डेटा Linked list. स्ट्रक्चर। ओके। ठीक है ना, समझ में आया? यस सर। सारे Yes, बोलो sir. यस या नो। यस सर, फ्लो Yes, समझ में आ Yes, गया। sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Very good. So today I have given you the concept of linked list. Tomorrow we have two choices. If you have implemented compress 4, then we will proceed further in compression project. If you have still not completed compress 4, then we will proceed further in linked list. Okay? Depending on how you go ahead, I go ahead. Right? हाँ सर। Yeah, tell me. सर आपने जो अभी हमने ये बनाया है लिंक लिस्ट, ये
सर हम इसको एरे के थ्रू भी कर सकते थे ना? Array will give you a continuous memory location. Array is a collection of elements of same type stored in continuous memory location. Whereas linked list is not continuous memory location. See, this structure is allocated somewhere else. This is allocated somewhere else. Its starting address is provided here. This is not continuous at all. Oh, okay, sir. In arrays, you can access the individual elements of the array using indexing, go directly to the nth location, whereas in linked list, you cannot go to the first location or second location directly or the third location directly. You have to use the start pointer, and from the start pointer, you go to the 0th and the first and the second and the third. This is the linear access to the data stored in the data structure. Therefore, it is called linear data structure. Okay, sir. Okay. Chalo, that's all I got for you today, and I'll see you guys in the next class where we will implement linked lists. Bye bye.